So, hello everybody, namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 अनटोल्ड सीक्रेट जो आपको काम आएंगे जब आप अपने डेमो लेक्चर के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब जिन लोगों को नहीं पता है डेमो लेक्चर क्या होता है, सबसे पहले उनको थोड़ी सी डेफिनेशन में बता देती हूँ। डेमो लेक्चर वो लेक्चर होता है जिसमें आपको इंटरव्यू के टाइम पे एक क्लास के अंदर भेजा जाता है एंड आप लोगों को उस क्लास को पढ़ा के दिखाना होता है। चाहे आप टीचिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर आप टीचिंग में किसी स्कूल टीचर का इंटरव्यू देने वाले हैं, हर जगह मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपका डेमो लेक्चर होता है। मैंने जब अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया था, व्हेन आई वाज अ कैंडिडेट ओवर देयर, तो मेरा भी डेमो लेक्चर हुआ था। ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपके स्टूडेंट्स नहीं होते हैं जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का डेमो लेक्चर देने जाते हो, बट अगर आप स्कूल में कोई टीचिंग जॉब का स्कूल टीचर का डेमो लेक्चर देने जाते हो तो उस टाइम पे स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसी डेमो लेक्चर को देने के आपको 5 अनटोल्ड सीक्रेट बताने वाली हूँ, क्योंकि इस डेमो लेक्चर पे आपका बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपने कैसे क्वेश्चंस का आंसर किया है उन पे भी डिपेंड करता है, अलॉन्ग विद दैट कि आपने डेमो लेक्चर में कैसा परफॉर्म किया है उस पे भी आपकी जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत लंबी वीडियो बनाने का मेरा कोई पर्पस नहीं है, मैं बहुत कम से कम टाइम में आपको 5 सीक्रेट्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले सीक्रेट की। सो नंबर 1 इज शिफ्ट योर माइंडसेट फ्रॉम इम्प्रेसिंग टू क्रिएटिंग द क्लैरिटी। जब भी आप क्लास में एंटर करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर द मास्टर ऑफ दैट क्लासरूम। आपको अपने सेल्फ डाउट को, फियर ऑफ जजमेंट को, ओवर थिंकिंग को कॉन्शियस नहीं होना है। इन सारी चीजों को आपको डस्टबिन में डाल देना है कि यस, देयर इज अ प्रिंसिपल, देयर इज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और कोई भी जो भी आपको जज करने के लिए वहां पे उस टाइम उस क्लासरूम में प्रेजेंट है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को इग्नोर करना है। आपको उस डर को भगा देना है कि आपको कोई टेस्ट करने वाला है, आपको जज करने के लिए कोई वहां पे बैठा है। अगर आप अपने माइंड के कुछ परसेंटेज को उस फियर में ही लगा देंगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप पूरा का पूरा टोटल 100% अपना उस टाइम उस क्लासरूम में नहीं दे पाएंगे। आपको किस चीज पे ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि इस क्लास में जो वीकेस्ट स्टूडेंट बैठा हुआ है, आप अपने उस कॉन्सेप्ट को उस वीकेस्ट स्टूडेंट को भी क्लियर कर पाओ। जब आप क्लास में जाने से पहले क्वेश्चंस पूछो तो आपका जो वीकेस्ट स्टूडेंट है उससे भी आपका टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। यू नीड टू फोकस ऑन टू क्रिएटिंग द क्लैरिटी in spite of just focusing on to creating an impression. Just shift your mindset from there. Now, the number 2 secret is do not hold any textbook or the paper. You do not need to hide behind the textbook or the paper. Your preparation should be so thorough that the topic just flows from your body and from your brain. You can use the various another demonstration objects. You can use the basic objects like a pen and a paper or bottle or a glass which is there into the classroom, but never ever carry any paper, any textbook, nothing, because you will be informed earlier only that you're going to have a demo class. So prepare it by giving your heart and soul, that you do not get hesitate, you do not get confused in any of the portion of your preparation. So be so confident and leave the textbook and the papers behind. Now, the number 3 top secret is that maintain strategic eye contact and move freely. Just forget that there is a principal who is sitting over there. You need to maintain the eye contact with the student, not with the faculty members, not with the principal, nobody. Just ignore them like anything, as if they are not even sitting into the classroom. Your Ramband will be when you will be making the eye contact with the student. And second important thing over here is that you do not need to stick to a particular place. You do not need to stick to the dice only. If you're going to move freely into the class among the rows of the student, asking them, talking to them, and just making them more comfortable with you, then it is just going to be very, very beneficial for you. So this is the third secret, that do not stick to a particular place. Just move freely into the classroom, just make the eye contact, talk to the student,
reverse questions to the student, and just have a conversation with them. Now, the point number 4 is that dress with dignity to teach with presence. Now, what you understand by that? Whenever in the morning you're going to get up, you need to have this thing clear into your mind that how you're going to dress up today. For a female candidate, it is always advisable to wear a light color sari. There is no requirement of any jewelry, nothing. And if you're not comfortable into the sari, then in that particular case, you can go for the cotton suits. All those suits should be proper A-line fitted or the straight fitted. There is no need of the anarkali suits and the juttis, and nothing fancy is required. You just need to look like a teacher, a decent teacher that makes an impression onto the student. And when you enter into the classroom, there should not be any requirement of introducing you as a teacher. It should reflect from your personality that a teacher has entered into the class. And your clothes, your attire, whatever you wear on to that particular day makes a very, very big difference. Now, for to the male candidate, you all can go for the formal attires, and you all know what is a formal attire. You can go for a trouser and a shirt. And for the color combination, I would just prefer wear a very light color shirt, a sky blue shirt or a white shirt, and a gray or the solid black trouser with the good quality stuff. So that was for the male candidates. Now, the last and the final pointer for this particular video is ditch outdated hooks and end the class professionally. Now, when your lecture is about to get over, you need to remember that how to just finish this lecture, because somebody is sitting there to see how you're going to just end your lecture. So for this, the tip is that you do not have to end this traditionally. How you can end your lecture? The example is, you can recall the lecture, you can revise the topic, you can ask the question to the student, or you can ask any of the student with whom you had made a good eye contact. Select the student. That is also important. You know, when you are teaching into the class, which student are listening to you and which student is paying the good attention to you. So what you have to do at this particular time, you have to pick up that particular student who was very, very sincere into the class, and then recall and revise. And then with the final note, you can just leave the class and say thank you to the class. So you do not have to end your lecture with the normal traditional hooks, nothing. We'll meet tomorrow and so on. You just need to revise and recall your lecture, so that all those who are sitting to judge you, they understand that whatever you have taught has been grasped by the student. They have actually understood it. And how that is going to be proved? When you're going to recall and revise the topic with the student. So all these are the 5 very, very important hooks, I would say, which are going to help you to clear the demo lecture. And if your demo lecture happens online in the various online, for the various online platforms, then in that particular case, I'm going to make another video if you people urge me to make that, ask me to make that. Otherwise, all these important tips, just follow them one by one, and I'm sure that you're just going to save yourself from making any blunder mistake. So this was it. If you have any another query regarding this particular topic, you can just comment me down into the comment box and ask me whatever you feel so. And I'll just say that I'll meet you in my next video. Till then, just take care of yourself. Thank you so very much. Bye bye. Jai Hind. Namaste. Thank you.